all the attendees for the second session are right now in other sessions, and it's important that they should come too. And the only thing is that we cannot forcibly bring our authors and others here. If they were staying with us in OUP, they would have been with us right here. I can get up and do it. I think I'll do that next time. I'd like to. बल्तिस्तान भी कश्मीर का एक हिस्सा है और इंतहाई खूबसूरत जगह है, और अगर आप लोग कभी नहीं गए तो अपने वालिदैन से कहें कि बहुत ज़रूरी है। ये पाकिस्तान का इंतहाई खूबसूरत इलाका है, और अगर जन्नत दुनिया में हो तो अमीर खुसरो साहब ने बिल्कुल सही फरमाया था। इधर की जो खुसूसियत है, डॉक्टर साहब आप भी इस पर बात कीजिएगा, बिकॉज आपने भी हाइकिंग की है उधर, तस्वीरें भी बहुत अच्छी हैं उनकी। उधर की जो खुसूसियत ये है ना कि उधर पहाड़ हैं, ठीक है, पहाड़ों के गिर्द जहाज़ जाता है, पहाड़ों के दरमियान, पहाड़ों के नीचे पहाड़ उड़ता हुआ सीधा K2 की तरफ जाता है, ठीक है। आप लोगों को पता है K2 दुनिया में किस नंबर पे आता है? यस, नंबर 2। तो ये जहाज़ जाता है सीधा K2 की तरफ। मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा जहाज़ से K2 की, और जैसे ही वो K2 की तरफ जाता है, मैं दोनों में कहूँगा बिकॉज वी हैव सम नॉन उर्दू स्पीकिंग पीपल हियर ऑल्सो। सो एज सून एज इट फ्लाइज टू K2 इट बैंक्स, और ये मुड़ता है, इट टर्न्स, इट सिंक्स, नीचे गिरता है, और मुड़ते हुए नीचे गिरता है, लंबा सा सी शेप, जे शेप का एक ट्रैक लेता है, और उस जे के एंड के ऊपर रनवे के ऊपर लैंड कर जाता है। और जब आप जहाज़ से निकलते हैं, माहौल जो है पहाड़ बग़ैर किसी हरियाली, माउंटेन्स, when the plane lands there are mountains without any vegetation, they're brown। जी, फॉकर जनरली फॉकर चलता है, मगर उधर बड़ा भी जा सकता है। I think the small Boeings can go, but they go when the weather is very good. The ATR, not the Fokker, the ATR goes, जो turboprop होता है इनका छोटा सा। So, and ये जी, compared to the Lukla Airport from you enter the Himalayas. How does it look like? I have not been to the Lukla Airport. Have you been to the Lukla Airport? No. There's no comparison. I can answer her question. The Lukla Airport is basically based on a plateau where it's a deep end at one side and deep end at the other side. So the plane has to make a perfect landing. If it doesn't come, it's gone. So no. This airport is much more better than it's on the ground. Yeah, it's on the ground. What happens is Skardu Valley जो है, the Skardu Valley opens up into a big dish. So you go through a narrow constriction, you turn, you sink. The plane actually, as it comes down, the mountains rise up, and suddenly you're surrounded by walls. You've seen it, and then it does a U-turn, and it lands beside the river. Okay, but the spectacular thing is not the flight. The flight is exceptional. There's nothing. I've traveled a lot in the world, and I've flown a lot. This is one of the most exceptional flights. Perhaps the Gilgit landing is more exciting. Okay, yeah, but the most exceptional thing is that when you get out of the plane, it's the starkness, the crispness of the air, the starkness of the environment, and they taxi to a place where there are sand dunes that hide the horizon. So you see sand dunes, pure, clean sand dunes, and this wonderful ring of mountains around you. It's breathtaking. And they don't let you take a photograph. Yes. So my wife took out her phone and quickly took a few photographs. So I was telling her don't. So I haven't dared put those in the book for obvious reasons. But
I went there when the apricot blossom was there. I was hoping to get the cherry because I didn't know how intense the apricot bloom would be. And the book is a celebration of this. Doc, can you take over for a few minutes while I set up my computer? So let me hand over this to the more... नहीं, मैं आपको थैंक यू. मैं स्टूडेंट से कहूँगा कि आपको पता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? माउंट एवरेस्ट. और जब माउंट एवरेस्ट दरियाफ्त नहीं हुआ था तो फिर कौन सा पहाड़ सबसे ऊंचा था? है K2. आपका क्या ख्याल है? और आप लोग सब कहते हैं K2. तो भाई दरियाफ्त नहीं हुआ मतलब नहीं कि था नहीं, तो फिर भी ऊंचे से ऊंचा एवरेस्ट ही था, वो तो दरियाफ्त नहीं हुआ था. वो नहीं कि मैंने पूछा आपसे, मैंने कहा जब दरियाफ्त नहीं हुआ था. तो एवरीबडी इज अवेक देन. हाँ, तारिक जो बता रहे थे फ़्लाइट इनटू गिलगित और स्कर्दू, मेरा इत्तेफाक जाने का हुआ. 2 दफ़ा तो हम लौट के आ गए क्योंकि वहाँ मौसम के एतबार से फ़्लाइट चलती हैं और सारी फ़्लाइट रिवर दरिया इंडस के ऊपर गुजरती है. तो विजुअल गाइडेंस के तहत वो चलता है. जब आपका मौसम सही नहीं हो तो फिर वो वापस चले जाते हैं इस्लामाबाद को. और जैसे तारिक बता रहे थे बहुत ही खूबसूरत एरिया है. और एक दफ़ा मेरा इत्तेफाक हेलीकॉप्टर से हुआ जाने का, और फुल 10 या 12 मिनट तक हेलीकॉप्टर K2 पहाड़ के ज़्यादा नंगा पर्वत के साथ साथ वो चलता है. 10-12 मिनट बहुत होते हैं, इतनी लंबी वो रेंज है. सो पाकिस्तान के जो पहाड़ हैं जी जी राइट. अच्छा, दुनिया में जब आप देखते हैं पहाड़ तो सबसे ज़्यादा ऊंचे पहाड़ पाकिस्तान में हैं और दुनिया से लोग यहीं पे आते हैं माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए. अगर आप साउथ अमेरिका को देखें, सेंट्रल अमेरिका को देखें और नॉर्थ अमेरिका को देखें और सबको मिलाकर ये पूछें इनमें कितने पहाड़ ऐसे हैं जो कि 8000 मीटर से ऊंचे हों या 22000 फुट से ऊंचे हों, तो आपको सुन के ताज्जुब होगा कि सिर्फ 2 हैं. एक माउंट मैकिनले है अलास्का में अमेरिका में, और दूसरा साउथ अमेरिका में एंडीज़ माउंटेन में है. पाकिस्तान में 107 पहाड़ हैं जो कि 22000 फुट से ऊंचे हैं. और दुनिया में जो 14 सबसे ऊंचे पहाड़ हैं उसमें से 5 पाकिस्तान में हैं. तो आप देखिए कि कितना हम इसमें कितने खुश नसीब हैं कि इतनी बड़ी पहाड़ियों के रेंजेस हमारे पास हैं. पहाड़ तो पहाड़ 3 रेंजेस, हिंदू कुश हमारे पास है, नंगा पर्वत काराकोरम हमारे पास है, और हिमालयाज़. ये 3 रेंजेस पाकिस्तान में हैं. तो अब आप जो देखेंगे तस्वीर वो बल्तिस्तान की हैं, वो जैसा बता रहे थे तारिक, वो भी पाकिस्तान का कश्मीर का हिस्सा है. और अगर 1947 में कश्मीर ये हिस्सा भी चला जाता तो आप सोचिए क्या होता. तो बड़ी हमें खुशकिस्मती है कि हमने इस हिस्से को तो रिटेन किया कश्मीर का. तो मैं और ज़्यादा नहीं कहूँगा, वेट फॉर तारिक. और आप जो तस्वीर क्या बोलूँ मैं अच्छा ठीक है जनाब, प्लीज़ इजाज़त ज़रूर प्लीज़. The only restriction you have is that you won't get a helicopter. That's the only restriction. नहीं, रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं जी. एक्सक्यूज मी. I belong to the same area अच्छा, and we are not part of Kashmir. I just want to confirm that. We are not part. But we have our own identity and we have nothing to do with Kashmir. We have been suffering due to it. अच्छा चलें, मैं आपको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट के ऐसे कह रहे थे. उन्होंने रूल किया है कि जी दैट वाज पार्ट ऑफ पाकिस्तान. चलें, बट बियॉन्ड कंपेयर है, आपको मतलब बेनज़ीर है. तो चलिए अपनी खुद मिसाल है वो. अच्छा, और बस ये कि पाकिस्तान के पहाड़ इतने वसी हैं और इतने ऊंचे हैं और कि मेरे ख्याल से दुनिया से लोग यहीं पर आते हैं. और बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी भी हैं जिन्होंने इन पहाड़ों को अबूर किया है. नज़ीर साबिर एक हमारे पाकिस्तानी क्लाइमर हैं जिन्होंने सारे 14 पहाड़ों में से मेरे ख्याल में 8 या 9 को उन्होंने अबूर किया हुआ है. तो बहुत बड़ी बात है. और एक खातून भी हमारे समीना अहमद नाम है उनका, उन्होंने भी समीना एनीवे, तो शी इज़ ऑल्सो स्केल्ड द टॉलेस्ट एंड द हाईएस्ट माउंटेन्स ऑफ पाकिस्तान. और कोई सवाल, यंग आप लोग को सवाल पूछना चाह रहे हैं?
जी, व्हाट सीज़न इज़ द बेस्ट? अगर आप फूल और बहार देखना चाहते हैं तो अप्रैल इज़ अ टाइम, जबकि एप्पल ब्लॉसम्स और एप्रिकॉट ब्लॉसम, मतलब खुबानी के फूल, और दूसरा मगर अगर आप डियोसाई प्लेन्स पे जाके और उसके फूल देखना चाहते हैं तो वो अर्ली जून होता है। दियोसाई प्लेन्स दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट प्लेन है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के बाद। ये तकरीबन 13-14 हज़ार फीट की बुलंदी पर है और वो ट्री लाइन से ऊपर है। इसका मतलब ये है कि कोई वहाँ पे झाड़ नहीं होते, सब फूल निकलते हैं। वो भी जैसा बताया है अगस्त में, जुलाई और अगस्त में आते हैं। उससे पहले बर्फ़ होती है और उसके बाद भी बर्फ़। जी, क्या कह रही थी? यू वांट करेक्ट? जून, जब सर्दी शुरू हो जाती है, लीजिए जून जुलाई, उसके बाद फिर सर्दी शुरू हो जाती है। तो ये जी, जी, आई लेट रेहाना आंसर दिस क्वेश्चन। जी, ये बहुत दफ़ा जा चुकी है। बिकॉज नहीं, बहुत दफ़ा तो नहीं जा चुकी, लेकिन एक्चुअली तो आपको आंसर करना चाहिए था। मगर हम जब बहुत दफ़ा हवाई जहाज़ से तंग आ गए, जो उड़ता ही नहीं था, और हम वहाँ पे इस्लामाबाद में घर से दूर बैठे हुए थे, तो हमने सोचा कि हम ये करते हैं कि हम बाय रोड जाते हैं। तो 21 आवर्स लगते हैं इस्लामाबाद से और स्कर्दू, यानी बीच में आधा घंटा, हर चौथे घंटे पे आधा घंटा रुकते हैं, मगर उसके बगैर तो गुजारा नहीं होता। तो इट्स अ 21 आवर ड्राइव, एंड द ड्राइव इज़ spectacular, because just like the flight is along the Indus Valley, so is the drive along the Indus Valley. And so you have two barren mountains on both sides, a very narrow valley with the gorge of the Indus right below you, and then this road, which by the way was not made by the Chinese but by the FWO from Gilgit to Skardu. That road just crawls along about halfway from the peak to the base of the mountain, and you go there, and it is remarkable. It's very, very good. I think I envy anybody who's from that area, and I wonder why he's even here. He should go right back. काराकोरम हाईवे 1960 में बनी, और ये पाकिस्तानी और चाइनीज़ की ताउन से बनी गई, और 1962 से शुरू हुई। उसको बनने में तकरीबन 12 साल लगे, और ये 3 माउंटेन रेंजेस को अबूर करती है ये काराकोरम हाईवे। और ये 2 और 3 फॉल्ट लाइंस पे है, मतलब ये कि अर्थक्वेक्स यहाँ पर बहुत कॉमन होते हैं। जैसे आपने देखा 2005 में बड़ा ज़बरदस्त अर्थक्वेक आया था। अच्छा, तो ये जो काराकोरम हाईवे है, ये गिलगित से जाती है और गिलगित से आगे होती हुई चाइना तक पहुंच जाती है, खुंजरा पास तक के। स्कर्दू नहीं जाती है, जैसे अभी रेहाना बता रही थी। तो जंगलोट एक जगह है, वहाँ से दूसरी रोड जाती है जो ईस्ट की तरफ जाती है, वो जाती है स्कर्दू को, और वहाँ से सारे पहाड़ शुरू होते हैं, बड़े बड़े पहाड़ जो पाकिस्तान के हैं। तो वहाँ से स्कर्दू के बाद आपको जीप लेनी पड़ती है, और उसके बाद फिर आप आगे जाते हैं और सारे बड़े पहाड़ को देख सकते हैं। मगर गिलगित में इतने बड़े पहाड़ नहीं हैं, खुजरा पास तक के। ऑल ऑफ देम आर लोकेटेड इन स्कर्दू। पाकिस्तान के पहाड़ों में एक बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत एरिया कॉल्ड कॉन्कॉर्डिया। Concordia is also reached after going from Skardu and Astor and go east and north. And Concordia is very famous because 4 of the tallest mountains of Pakistan are located within 2 kilometers. And these mountains are base of K2. Then you have Mosherbrom 1, Mosherbrom 2 and Broad Peak. These are the mountains which are located in Concordia. And this is called the throne of the mountain god. This is where the most beautiful part of Pakistan is. I'm just rambling away, waiting for you to get. We're not going to start for 10 minutes. Rambling, more rambling, is it? Achha, okay. Please do come for Dr. Iftikhar's book launch tomorrow. His book is sitting beside mine, Jerusalem. Achha. And Tomorrow it's 10 o'clock, right here in this room. 10 o'clock in this room. Yeah, we'll talk about the history of Iran. I picked this up. Iran, history of Iran. The, last time, this is Iran this time. Ji. Thank you. Please do come. Huh?
अच्छा जी. So shall we wait for a little while? Huh? We'll start in about 3 minutes. And thank you very much for coming here. I'll get Dr. start when we officially start. Are you ready for me? When I'm ready for it. This is not actually a book launch. The book was launched on the 5th of December. The book was launched on the 5th of December by the German Consul General, Dr. Thilo Klinner. It's a great thank you to him for this. So this is a book introduction and a slideshow on the images that we have. And that are in the book and some more. It was a very special journey. And what we would like to do, Dr. and myself, is we'd like to show the images. We would like read a little bit of the poetry that the book has. I'd like to present the music that was composed for this, especially by a very talented young musician, Mr. Hamid Rahim. He should be coming in a few minutes. And I'm going to keep a time period aside for question answers on these images. So I'm going to talk very concisely because I've been rambling on before that. It's a little difficult. So so if you could just wait another 2 minutes or so, and I'd like to start on the proper time. We want to wait for a couple of minutes because people who have sponsored the book and family of Tariq will be arriving shortly. So kindly bear with us. It will be just a couple more minutes. Is the book available? Right here. The book is on the Liberty Stall, and it's available at... Yeah, at the Liberty store here. Pardon? Who pays for it? Well, you're extremely kind to me. So I might, but it's going to be expensive if I give it to you. Bilkul. Acha ji, here we are. Okay. I really don't think Tariq needs more introduction after all that he has spent time here. People know him. And it's very difficult. It's not simple to introduce Tariq. He's a man of myriad accomplishments and he has a personality which endears him to everybody and raises him above most of our friends. So Tariq is also an accomplished artist. He's a photographer. And you'll be enthralled and captivated by the photographs you will see of Baltistan. He has many hobbies. Aside from being an artist, he works in acrylic or waterpaint. He works in acrylic and watercolor. And Tariq has touched life in many, many places. He is a celebrated architect in Karachi, and much of his celebrated work are the gifts to the community, like the Indus Hospital, the community schools in various developing areas in Karachi. And Tariq has been very much in the forefront in designing the city's structure here. So Tariq, it is a privilege to know you, and please. Thank you. Thank you, Dr. Saab. Just a note of qualification, I take no responsibility for what's happening in the city. Could we have the lights off, please? This is a
emotive journey. This is a journey of emotions. This is not just a visual journey. The mountains that I talked about, the valleys, the rivers, are all present to provide a contrast. And the contrast comes and was visible in April when the apricot blooms were there. So the harshness of the mountains, the desiccated feeling of death and termination was offset by these wonderful, soft, luscious blooms. Where water met earth, the landscape changed. Where water met earth, human beings and the population thrived with smiles. It's a tough environment. It's a forbidding environment. But there's a gentleness there. And there is a sense of timelessness. There's a sense of continuity. And that's what I'd like to express over here. I took the pictures because I take pictures as a habit. I take them for the joy of it. It helps me see. It helps me frame. When I looked at the images the first night, I realized how much of a disservice I was doing by not working my camera. I've been holding a camera since the age of 7, maybe 6. The area, the emotions that exist in that environment deserved more. So the day after that, I started working. I spent the 5 days in silence, which is very difficult for me, but I did. And before the images, there was poetry. The emotions dictated the words, which I have penned. The words were, I tried writing them in English, because that's my general first language. They would not come in English, so they came in Urdu. And I have used simple Urdu. I have used Urdu with no Farsi. I have used colloquial street Urdu, perhaps not high street Urdu, perhaps not Lucknowi Urdu, but definitely high street Urdu in Karachi and Gali Urdu in Lucknow. So without that, without any more ado, let me start, and then I will save time for the question and answers afterwards, if there are any. So, I mean, I have a very difficult task. We have a gentleman here in the front row who is very presenceful and staring me down. So I hope I do justice to your absolutely wonderful valleys. So as I said before, the book was launched by Dr. Thilo Klinner at the German Consulate on the 5th of December. Very, very thankful to him. Very thankful to all the sponsors. Mr. Khalid Mahmood of Getz Pharma, I hope he's here. He should be coming. Tawfiq Chinoy Sahab, Riaz Chinoy, and Sultan Alana have all been very gracious and pre-purchased books which allowed me to venture into this further. And the book is available at Liberty. I hope you all enjoy it. And don't criticize me too much for it. So the first impression, I mean, this is something I had to, I penned a lot of verses. I've selected some of them for the book and some of them here. So this, Baltistan, asmanon ko chuna chaha, pahunch ke bhi kamyab na raha, नीचे से पहाड़ों पे निगाह जब उठी, बल्तिस्तान के बादलों ने अपना ही कहला डाला. And the overall book is structured into 13 segments and the 13 verses. Let me, if I may, take the time out to read them. हवा पे सवार फरजंद चट्टान पत्थर का जर्रा रेत इजहार एरेग जार तह पे बिछा ज़र्रों का समंदर कतरे को तरसता रेगिस्तान जीने का इख्तिताम चटखी हुई चट्टाने ज़ख़ीरा ज़र सितारों को ढांकते पत्थर ज़मीन के असरार
आसमानों को छूते ज़मीन के बाजू, चट्टानों को समेटते पहाड़, क़ुव्वतों का कमाल, क्या क़ुव्वतों का कमाल। ऊंचाइयों से नीचे फ़र्ज़ंद आब, ऊंचाइयों से नीचे फ़र्ज़ंद आब, नमी की अलामत बादल, जीने के आसार। चोटियों पे चांदनी, ठंडक का वजूद, पानी की जामद चकल, बर्फ़, तपिश की मुंतज़िर। वादियों को भरे आईना ए आसमान, गहराइयों को छुपाती झील, शराब जहां। चट्टानों को तराशते बर्फ़ के आंसू, चट्टानों को तराशते बर्फ़ के आंसू, निगाह अभी नीचे दरिया, आशियाने की तलाश, आशियाने की मुस्तकिल तलाश। हवा में फैले शाखे अंगुश्त, पत्ते से पहले पेड़, तसव्वुर बहार। ज़र्रे से मिला कतरा, रूए ज़मीन, बीज को मिली हिम्मत, पौधा, ज़िंदगी का इज़हार। ज़मीन से निकली औलाद शाख, महक को फैलाते फूल, मुंतज़िर असमार। नज़ारा ये आँख और दिल का, ये आज़माइश जहाँ, मोहब्बतों से भरा ये मकाम। सफ़र ये ज़िंदगी और जीने का, सिर्फ़ अदा कर सकता हूँ मैं बसत खुलूस ये नजराना। So this was these are the very simple verses that have very deep meanings for me. Like anything that is worthwhile, it should not be obvious. And there's a lot of joy, there's a lot of sorrow, but there's a lot of life, there's a lot of contemplation. And perhaps that is why there are so many Sufi silsilas that are based there, there are so many khanqahs there. Because this is a place of, an extreme place of the possibility for contemplation. The mountains speak out here. The rivers have a voice and they have a life. I have never experienced a depth of emotions in an environment as I have. All mountains all over the world talk to you. But the ones in Baltistan have something very special to say. So please, I'm going to take a back seat now.
This, I've broken the slideshow, and was a very special moment. This is a seminal moment about our trip in these valleys. This is past Kaplu, going on to sailing and just crossing the Shayuk riverbed, if you're familiar with this thing. This tree has a very special place in my heart, and I'll explain that a little later. But before that, is Hamid Rahim here? Okay. Hamid Rahim's not here. He's not well. He is the musician who's composed the score. I gave him my slides. It's a 15-minute score, an original score that was produced out here. The sound system is not doing justice to it. But he's a brilliant young man and someone that I'm extremely proud and privileged to call my friend and my colleague in working. So I am sad that he's not here, but Gaibana. There were two trees. One was this color, and my Balti new friend should please enlighten me as to what species this is. And the other one was this color. So what tree is this? I can't find it on the internet. It's pollarded every year, and it's used for burning and cooking, and it comes back. But someone planted these two trees in the middle of the flood bank of the Shayuk River. It's the Shayuk, not the Thale, it's just the Shayuk River crossing there. And it goes from brown branches to yellow branches to orange branches. Do you have any idea what this is? Not really. So if anyone knows this, because I've been asking botanists and they can't come up with it. If I could just introduce a person who is more enlightened to those areas is Mr. Mustansar Sen Tarar Sahab, who has written 12 Safarname on these areas, and he would be... I'll get you his contact. I'll get my contact. No, his sir, contact. please. Oh, please, would you know what tree this is, sir? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ख़वातीन हज़रात, अगर मैं आज इस महफ़िल में मौजूद हूँ तो सिर्फ इसलिए कि कोई भी शख्स जो शुमाल के बारे में लिखता है या शुमाल को प्रोजेक्ट करता है वो फौरी तौर पे मेरे दिल के करीब हो जाता है, क्योंकि पूरा शुमाल जो है वो मेरे दिल में रहता है। और मैंने इसीलिए 12 सफ़रनामे सिर्फ शुमाल के ऊपर लिखे, और बहुत सारी ऐसी मुकामात जिनके बारे में लोगों को आगाही नहीं थी, आगाही हुई। सो मच सो कि वहाँ पे फेरी मेडोज़ है एक जगह, वहाँ की लेक का नाम भी उन्होंने मेरे ऑनर में तारड़ लेक रखा। चुनांचे यहाँ पे मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि इट वाज ब्रिलियंट प्रेजेंटेशन। फारिग नहीं हुई सर। अच्छा, और मेरी ये ख्वाहिश थी कि हर तस्वीर के नीचे उसका मुकाम जो है वो लिख दिया जाता, ताकि लोगों को इसके ज़्यादा हर एक जगह आइडेंटिफाई हुई है, मैं सबको जानता हूँ, आइडेंटिफाई की जाए। और उसके अलावा ये कि भाई आपने पूछा, इन्होंने पूछा कि ये दो दरख्त जो हैं इनके स्पीशीज़ जो हैं कौन से हैं। एक्चुअली अगर मैं इतना टेक्निकल होता तो मैं एक साइंसदान होता, कोनवर होता। तो मैं फिर आपसे एक दफ़ा प्राइवेटली गुफ्तगू करूंगा। किसी को ढूंढना है जो इसका नाम मुझे दे दे। ये नाम आई कांट फाइंड दिस नेम, प्लीज गेट मी द नेम ऑफ दिस। हाँ देखें, बिकॉज़ लेट मी शो यू नहीं, मैं आखिरी बात करूंगा। मैं किसी औरत से ये नहीं पूछता तुम्हारा नाम क्या है, मैं देखता हूँ खूबसूरत है, ये खूबसूरत है। देखें, अगर आपको किसी चीज़ को समझना है ना, तो उसकी तह पे जाने के लिए उसकी रूह को समझना चाहिए। रूह को सिर्फ उसी वक्त समझा जाता है जब उसके किसी के नाम के ज़रिए ही जाया जाए।
Can we have the lights? Before I have another 5 minutes. Before I open it up for question answers, I'd just like to do, how much? Okay, we don't have time for question answers, so I apologize. But I mean, I'd like to do one thing before I leave. Asif, could you come here? I'd like to introduce a young man who handles all my multimedia problems in many aspects of my life. This is Mr. Asif Memon, and he's supported me tremendously in more ways than you have seen today. So I take great pleasure in presenting you a book from my side. Asif, thank you. Thank you very much. What's the name of the tree? What's the name of the tree? I'm looking. It's orange. It goes from brown to yellow to orange to green. And it does this before the leaves come out. It's not the leaf, it's a branch that changes color. Yes, there were close-ups on this. This was in April 2014. Which day did we go? Early April, I think we left, yes. So thank you very much for everything. So, Tariq, thank you very much for taking us from Karachi, the captivating place of Baltistan, and your beautiful photographs and your evocative poetry complements the two. So thank you very much for entertaining us and taking us to Baltistan.